Assalamu alaikum, dear students. Today we will start another chapter, that is judiciary. इससे पहले हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पढ़ा और तीसरा जो बुनियादी ऑर्गन ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स इज दैट वी से दैट इज जुडिशरी. Legislature is that branch which legislates, which makes the laws. Then executive is that branch which executes those laws. And judiciary is that branch of the government which adjudicates. It is that branch who decides the legal disputes. If disputes arise, and disputes are by nature to arise, यानी मसाइल तो उठते रहेंगे, डिस्प्यूट्स तो उठते रहेंगे और उन मसाइल का हल, उन डिस्प्यूट्स का हल निकालने के लिए भी एक लाजमी एक इदारे की ज़रूरत पड़ जाती है. And that institution in modern states has evolved in the form of judiciary. That means judiciary is one of the basic branches of the modern states. Now in this judiciary chapter, the syllabus highlights the first topic as रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ जो है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट concept, political concept and a legal concept. Rule of law means that simply we can say that law must govern, not the individual. Several thinkers have said about rule of law, and we say that Aristotle, who is regarded as the father of political science, he himself described also the rule of law. He said that it is the law that must govern, not the individual. Aristotle believed that the human being after all is fallible. इंसान जो है वो गलती कर सकता है और इससे बचने के लिए क्या अरिस्टोटल ने कहा. अरिस्टोटल said that कि कुछ कवानीन होने चाहिए और उन कवानीन की पासदारी वही कानून, उन्हीं कानून के ज़रिए मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए और तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो हुक्मरान हो या आम इंसान हो, उन्हीं कवानीन के ताबे होने चाहिए. एंड दैट वाज रूल ऑफ लॉ. इन मॉडर्न टाइम्स हम देखते हैं कि in 19th century it was a British jurist A.V. Deasy who worked on this concept of rule of law, and he elaborated it, and he popularized this concept of rule of law. जैसा कि आप ये जो हमने एक पिक्चर आपके सामने दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ व्हील, इसमें रूल ऑफ लॉ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए गए हैं. यानी द बेसिक थीम ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ दैट नो वन इज़ अबो लॉ. यानी एवरीबडी, यानी एवरी, चाहे फिर वो इफ़ ए पर्सन इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल और इज़ ए प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी एक सरकारी ओहदेदार और एक आम इंसान, जो दोनों जो हैं वो कानून के ताबे होने चाहिए. यानी ऑल पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट और सब्जेक्ट to and accountable to the law. The rule of law says that
हर कोई कानून के ताबे होना चाहिए। दिस रूल ऑफ लॉ also means that also it includes that rule of law. It says that the court system must be independent and the disputes must be resolved in a very fair manner. यानी कानून की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फेयर मैनर में होनी चाहिए, उसमें कोई भी फेवरेटिज्म, कोई भी बायस नहीं होना चाहिए. दैट्स रूल ऑफ लॉ. देन दिस ऑल्सो includes rule of law that all persons are presumed innocent until proven otherwise by a court. यानी रूल ऑफ लॉ इसको भी कहेंगे कि तमाम जो इंसान जो हैं उनको मासूम समझा जाए जब तक कि न ये प्रूव हो जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट द पर्सन इज गिल्टी, तब तक तो उसे इनोसेंट ही समझ लेना चाहिए. Then it also includes, we say that no person shall be arbitrarily arrested, imprisoned or deprived of their rights. यानी किसी भी इंसान, चाहे वो आम इंसान हो या बड़े से बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, उसको arbitrarily must not be arrested, must not be imprisoned. Then rule of law says that, we say that ये जो that the laws must be framed in a quite transparent manner, and laws must be framed in a transparent manner. They must be applied to in a transparent manner, and they must be applied uniformly on every person without any we can say without any prejudice, without any favoritism. Yani that this simply we say is rule of law. यानी rule of law जो है, it we say it includes several things. यानी इस एक प्रिंसिपल में बहुत सारे प्रिंसिपल छुपे हुए हैं इस रूल ऑफ लॉ. यानी इस रूल ऑफ लॉ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है. यानी रूल ऑफ लॉ सेज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Rule of law says that everybody are equal before the eyes of law. Everybody is equal before the eyes of law. Rule of law also includes the principle of separation of powers. It includes principle of supremacy of law. It includes accountability to the law, and it includes fairness in the application of the law. And we can say that rule of law is one of the basic pillars of democracy, and we can say that rule of law is basic to any democracy. If rule of law is not present, we can say the democracy is not present. Hope you may have understood this. Thank you.